Good morning students. In the last video there is a topic of oxygen family and we have discussed their chemical properties regarding to the hydrides. We discussed the various characteristics of the hydrides. Now next property is about the halides, that is oxygen family with halides. Clear? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी कि जो ऑक्सीजन फैमिली है वो हैलोजन्स के साथ इंटरेक्ट विद हैलोजन्स टू फॉर्म द हैलाइड्स. सो दीज एलिमेंट्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद हैलोजन्स सच एज AX6, AX4 and AX2. Here A is the elements of the oxygen family and this is the halogens. Clear? Now it has capability to form monohalides, that means it containing one halide, dihalides and the tetrahalides as well as hexahalides, that means with 2 halogens, with 4 halogens and with 6 halogens. So among all the members, sulfur forms all the halides of this family due to the variable oxidation state. Clear? The compounds which has capability to show the variable oxidation state, it has also the capability to form the large number of the complexes. Clear? Sulfur form monohalides such as sulfur monofluoride. Its formula is S2F2. As well as sulfur monochloride and its formula is S2Cl2. Clear? Also dihalides, all elements except selenium form stable dichlorides and dibromides. Also diiodides are not readily formed. Dihalides of selenium are not stable. This is because of the dihalides of the selenium are not stable. Amongst the dihalides, this one, that is SCl2, the complex of the sulfur with halogen, is best known. Clear? And its shape is angular shape and its bond angle is 103 and having 2 lone pairs with 2 bond pairs and it forms the irregular geometry. सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है SlCl2 के बारे में बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल अमंग ऑल द डाइहलाइड्स. सो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दिया. यहाँ पे हमने इसकी शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल को डिस्कस कर दिया. यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री है दैट इज इरेगुलर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द 2 लॉन पेयर्स एंड ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ 2 लॉन पेयर्स. इसका जो बॉन्ड एंगल है वो भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द डाइहलाइड्स. और सबसे ज्यादा स्टेबल डाइहलाइड्स कौन फॉर्म करता है, दैट इज सल्फर. नाउ टेट्राहैलाइड्स. अमंगेस्ट टेट्राहैलाइड्स, टेट्राफ्लोराइड्स आर मोस्ट स्टेबल. दैट मीन्स SF4 कह लो आप, SeF4 कह लो, TeF4. दीज कंपाउंड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दीज आर मोस्ट स्टेबल अमंगेस्ट ऑल द टेट्राहैलाइड्स. क्लियर? बिलोंगिंग टू दिस फैमिली. About hexahalides. Hexahalides, amongst hexahalides only hexafluorides are stable compounds. These are all gases in nature, that is SF6. SF6 is extremely stable and chemically inert for their steric hindrance. This is exceptional case, but others are stable compounds. Now reactivity with oxygen. All the elements of this group form main oxides, that is EO2. Here E is the element of this family, and EO3 such as monoxide, dioxide, trioxide and heptaoxides. Means most commonly ये dioxide and trioxide को form करते हैं. So all the elements except selenium form monoxides. For example, sulfur monoxide is formed by heating a mixture of sulfur dioxide and in this case sulfur oxide is formed. Similarly, dioxides
all the elements of this family have a tendency to form the dioxides, that is SO2, SeO2, TeO2, PO2. That means all the members have tendency to form the dioxides. Clear? Now trioxides. All the elements of this group form trioxide having the formula EO3, and amongst between them SO3, that is a sulfur trioxide, is the most important, while SeO3 and TeO3 are also well known. And SO3 is formed by the direct combination of sulfur dioxide and oxygen. With the combination of sulfur dioxide and oxygen, sulfur trioxide is formed. And these are the some properties, that is in last video में हमने डिस्कस किया था हाइड्राइड्स को. क्लियर? सो दीज आर द हाइड्राइड्स. उसके बाद हाइड्राइड्स में हमने इसके रिड्यूसिंग करैक्टर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट्स को डिस्कस किया. आफ्टर दैट है इसके हेलाइड्स. हेलाइड्स के साथ इसकी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन. दीज आर देयर केमिकल बिहेवियर. नाउ लास्ट वन इज देयर एनॉमलस बिहेवियर ऑफ दिस ग्रुप, दैट इज द ऑक्सीजन जो है उसका एनॉमलस करैक्टर बाकी मेंबर्स के साथ. सो फर्स्ट इज इट्स साइज इज स्मॉल, इट हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, also the absence of d orbital, and next one, oxygen is a gas at ordinary temperature while other elements exist as solid at room temperature. So these are some the points of anomalous behavior of ऑक्सीजन जो इसको बाकी मेंबर्स से अलग बनाते हैं. मेन जो है वो इसके दो ही पॉइंट है, इसका स्मॉल साइज और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स. इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर जो है बाकी और वेरिएशंस इसमें अकर हो जाती हैं. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल्स प्रॉपर्टी ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली.